Hello and welcome to Quantum IAS. This is day 5 of our daily answer writing program, and this is the last day for the week 1. And I hope on Saturday and Sunday you will be revising all those concepts and making your short notes. Now let us start with the question number 1. The question number 1 is a lengthy question, right? So it's a very lengthy question. First, you try to understand it's a lengthy question. So in examination, you can just skip this question if you have other options available. Now, if you see this question, they have given a homogeneous right triangular pyramid with base A and side 3a by 2 as shown in the figure. Obtain the moment of inertia of the tensor pyramid, right? So first of all, from our junior classes, we can simply get that the volume let us take it here. Right? This is the question number 1 we're talking about. Right? So in introduction, let's talk about the introduction. So what you will be talking about? You will be defining inertia tensor. You can see that moment of inertia tensor of the pyramid, right? This pyramid, you need to find out the moment of inertia pyramid. So what you will be defining? Moment of inertia, and here you can see it's a tensor quantity, not the scalar one. Moment of inertia tensor is the distribution of a rigid body ऊपर ही लिख लेते हैं distribution of a rigid body around a point, right? For scalar we know that around an axis we know that, but moment of inertia tensor is the distribution of rigid body around a point, distribution of mass of a rigid body around a point, right? And also you need to write few more things, that it is a tensor of rank 2. It is a real and symmetric tensor of rank 2 mathematically I, right? यहाँ पे लिख दोगे where I corresponds to what, IXX corresponds to what, right? ये सब लिख दोगे, छोड़ना नहीं है. IXX, IXY, IXZ, IYX, IYY, IYZ, IZX, IZY, IZZ, right? Where symbols has their usual meaning, right? And we know that, and then you will write for a continuous distribution right? You will write all those formula. So let me do one thing. Just move it further. For a continuous mass distribution, we can write IXX is equals to integration y square plus z square dm, or for a continuous distribution we can also write y square plus z square dm can be written as rho into dv, right? Similarly, you know the formula of y I z z, put the formula here, okay? Similarly, IXY
is equals to minus integration xy dm, that is minus xy rho dv. Again you will write xy and yx same, you know that, right? yz and xz, ये फॉर्मूला जो है ये सारी चीजें लिख दोगे. Why I'm telling you lengthy? Because the calculation become little bit lengthy, but we will understand how to solve this question again. See, so I will be calculating this one for you. I will be calculating ixx for you, and I will request you guys to solve the remaining portions, right? If you can solve this, you can solve all the things, right? Problem lies here how to write the dv element, right? So ixx can be simply written as rho bahar aa jayega y square plus z square, right? And triple integration of dx, dy and dz. Now question here lies that how will you write the limits of x, y and z. Now let us focus more on the dv part, क्योंकि देखो x square y square से multiply करना है. dx, dy, dz, what will be the value? This is of more importance in this question. अगर ये समझ में आ गया, you can easily solve this question. So understand, if you see this question, right, you can simply write this, that it is a volume enclosed by coordinate axes, that is x equals to 0, y equals to 0, z equals 0, and a plane, right? You can see that ये triangular plane दिख रहा है तुम्हें, right? जो बाहर की तरफ plane दिख रहा है, this one outer plane. तो इस plane से और axis से bound एक ये area है, right? I'm removing this for now. And this plane, you know that equation of plane is what? X by a, y by b, z by c equals to 1. So x by a plus y by b plus z by c equals to 1. I guess you have studied in your junior classes intercept form of a plane. So if you write here, so कितना आएगा? X by a plus y by a and z by 3a by 2. So 2z by 3a plus 1. This is the plane. Now understand, let us write about these lines. So if you talk about this line, this is basically what? This line represent x by a plus y by a equals to 1 and z is 0 here, right? This is lying on the xy plane. ये xy plane में है, ठीक है? Similarly, let us take other color. This line, it is in zy plane, so you can simply write y by a z by 3a by 2, that is 2z by 3a equals to 1, and where x is equals to 0. And last, let us take with red color here. This is a plane, sorry, this is a line, ये line की बात कर रहे हैं हम लोग, where x और z है. So it is x by a 2z by 3a equals to 1 and y equals to 0 here. Y equals to 0 है. Now we can take any order of the integration. Understand one thing, अगर हम लोग बात करें इसके वॉल्यूम की, if you need to find out the volume, then integration, it can be dx, dy, dz, or integration dy, dx, dz, or integration dz, dx, dy. Anything, any order will work, right? You need to understand what the order we are going to use and when. ठीक है, किसी को भी यूज कर लो, कोई इशू नहीं है. So let us take this.
लेट्स टेक दिस कंप्लीट ट्राइंगल। अब इसी ट्राइंगल को धीरे धीरे स्टैक करना स्टार्ट करोगे ऊपर, राइट? अगेन हियर आल्सो दिस ट्राइंगल, again here also this triangle, again here also this triangle, right? So we need to integrate these small steps, right? So अगर तुम देखो, so z की वैल्यू equals to 0 here, z की वैल्यू equals to 0, and till what z is going, तो याद रखो कि this volume is enclosed by coordinates, an axis and a plane, right? मतलब इस प्लेन पर तो z होगा ही होगा। तो अगर इफ वी टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ z, तो z इज इक्वल टू 0, हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं, राइट? अगर इस तरीके से अगर हम स्लाइस करना स्टार्ट करें तो इसकी वैल्यू z की वैल्यू कहां से आती जाएगी, z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू दिस मच, यहां से z की वैल्यू निकाल लो, तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 a माइनस x माइनस y। तो z की वैल्यू 3/2 a माइनस x माइनस y। आई गेटिंग इट? अगर हम ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स को इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दे, देन वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द होल शेप, राइट? तो दिस इज द कंडीशन ऑफ जेड। याद रखना, कई बार कंफ्यूजिंग इससे भी होता है कि ऐसा वाला पिरामिड होता है, राइट? रेक्टेंगुलर पिरामिड, सो उससे कंफ्यूज नहीं करना, इट्स अ ट्राइंगुलर पिरामिड जिसकी बेस भी क्या है, ट्राइंगुलर है। कहीं पे भी रेक्टेंगुलर शेप नहीं है इसमें, राइट? तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है कभी कई बार। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक्स और वाई, हाउ दे वेरी। So let us plot the x and y axis here, y and x, and y x में हमने ये ब्लू लाइन लगाया था। Now let us try to understand at x, if I take the small amount dA, we know that volume is what, dV is basically dA into height. So for this height we have taken the coordinate of z. What will be here? So this will be dx, what will be this area, ये y कितना आएगा? So at any x, y can be written as a minus x. So y can be written as a minus x, right? So ये हम लोग तब इंटीग्रेट कर रहे हैं जब हम लोग एक्स वाई प्लेन लेकर चल रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? वेयर एक्स वाई में हम लोग एलिमेंटल एरिया ले रहे हैं एंड हाइट इज अलोंग दी जेड, राइट? सो एरिया प्लेन is x and y and z is height. I'm just giving you description here. So if you talk about here, so y will be going from 0 to y equals to a minus x, and x to x बराबर 0 to x equals to a, right? For go, अब इसको उल्टा पढ़ो, for going x from 0 to x equals to a, we have to put condition for y will move from y बराबर 0 to a minus x, and z will move from z equals to 3/2 a minus x to a minus y. अब now see this integration, यहाँ पर है y square और z square, so we will try to first integrate it using x, ये dx, ठीक है? तो let us take dx as height, right? I try, आई होप ये समझ में आ रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये समझ में आ गया तो इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, यू कैन इजीली सॉल्व इट। दिस इज ऑन द टफर साइड ऑफ द वेरिएशन एक्स वाई जेड, इससे जितने भी वेरिएशन आते हैं वो आसानी आते हैं, जितने भी रेगुलर शेप हैं। तो नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये हमने क्या माना था, एक्स वाई प्लेन में एरिया, और ये ट्राइंगल ऐसे हम काट रहे थे। नाउ अंडर ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स टेक दिस प्लेन, किस कलर से लिया था हमने, ग्रीन। तो let us take this. Now x will move from here to the plane. x कहां से कहां मूव करेगा, yz प्लेन से लेकर जो वहां का जो बाहरी प्लेन है, राइट? वो प्लेन क्या है हमारा, x प्लस
क्या निकाला तुमने? x बाई ए, y बाई ए, 2z/3a+1। तो अगर z की लिमिटेशन है तो x की भी लिमिटेशन है, y की लिमिटेशन है, राइट? सो एनी पॉइंट x कहां से कहां वेरी कर सकता है? तो x कैन वेरी फ्रॉम yz प्लेन से इस प्लेन तक। z कहां से कहां वेरी कर सकता है? zx प्लेन से लेकर दिस तक। तो इफ आई टेक दिस वन, तो अगेन क्या ट्रायंगल बनेगा? ऐसा, राइट? सॉरी, इफ यू कैन सी दिस, ये किसकी तरफ जा रहे हैं हम लोग? x की तरफ, right? So from where to where x can vary? So x can vary from 0 to this plane, और इस प्लेन में अगर हम देखें तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? सो x विल बी इक्वल्स टू a माइनस वाई माइनस 2z/3। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दी yz प्लेन। yz प्लेन पे अगर हम बात करें तो एट अ गिवन y, this will be dy, and what will be z? z is equals to 3/2 a minus y। ये a है, ये 3/2 है, इंटरसेप्ट फॉर्म से वी कैन राइट। सो फ्रॉम हेयर y इज मूविंग फ्रॉम z बराबर 0 टू, सॉरी, z इज मूविंग फ्रॉम 0 to 3/2 into a minus y, and y is going from 0 to y equals to a। Understand this concept, right? This is again one variation and this was one again variation। ये डिपेंड कर रहा है कि हम लोग एरिया एलिमेंट किधर ले रहे हैं और हाइट किधर ले रहे हैं, राइट? बोथ ऑफ देम विल गिव यू द सेम आंसर। अंडरस्टैंड? बोथ ऑफ देम विल यू गिव द सेम आंसर। अगेन यू कैन y के लॉन्ग भी लेके कर सकते हो ये काम, बट ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हेयर इट विल बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, देन वन वेरिएबल एंड देन कांस्टेंट, ऐसा कुछ आना चाहिए। नाउ लेट अस फाइंड आउट ixx। सो ixx, इफ आई पुट रो को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, राइट? सो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर dx dz dy, order of integration doesn't matter, वॉल्यूम सेम रहती है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस। सो 0 से लेकर a माइनस वाई माइनस 2z/3, ये 0 से लेकर 3/2 a माइनस वाई, और ये 0 से लेकर a। दिस वन आई एम सॉल्विंग फॉर यू, राइट? जस्ट चेक इट एंड टेक द आंसर। बाकी खुद करो क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट आई नीड टू डिस्कस, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर। ओके, अच्छा एक चीज और बात कर लेते हैं सो दैट कि फिर ये, अगर हम बात करें इसके कंक्लूजन की, राइट? तो इस क्वेश्चन के कंक्लूजन में हमेशा जो है इसकी एप्लीकेशन लिख देना, राइट? इट इज यूज्ड टू मेजर द extent up to which the mass is distributed around a body around a point, right? अलग अलग जो यूजेस तुमने पढ़े मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्केलर के भी, दैट आल्सो यू कैन राइट हियर, राइट? एनीथिंग वर्क इन द कंक्लूजन आल्सो, फॉर जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है यू कैन कंक्लूड इट दैट आल्सो, राइट? ये जो फाइनल आंसर दैट यू कैन आल्सो कंक्लूड, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। पुट करो फिर, सो इट विल बिकम रो 0 से a, 0 से 3/2 a माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर एक्स एंड जेड स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर एक्स एंड जेड स्क्वायर एक्स। तो पुट कर देते हैं एक्स की वैल्यू, दिस विल बी द एक्स की वैल्यू, एक्स माइनस 0। देखना सब लोग क्या आएगा। तो ए वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको और फिर इसको, क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई करना है दोनों को, माइनस 2z/3 प्लस ए जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस 2z³ by 3। नाउ dz एंड dy, अब इसको डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ z, राइट? सो
जेड स्क्वायर को एक साथ वाई को एक साथ कर सकते हो, बट वट एवर द वे यू वांट टू इंटीग्रेट अगेन। मैंने थोड़ा सा लेंदी ले लिया था इसको, आई एम जस्ट राइटिंग दैट ओनली। यहाँ पर भी कर सकते हो काम। जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक बार ले लो, वाई जेड क्यूब को ले लो, और बाकी जेड जीरो के कोफिशिएंट को ले लो। बट लेट अस सी व्हाट आई हैव डन। सो व्हाट आई हैव टू पुट हियर, इसको हटा देते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर जेड, ए वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई क्यूब जेड माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस ए जेड क्यूब बाई 3 माइनस वाई जेड क्यूब बाई 3 minus z4 by 6, right? And from 0 to 2 3a minus y dy, right? Put the values again, यहाँ पर भी कॉमन ले सकते थे, बट you can write 0 to a. So a y square z, z is 3 by 2 a minus y cube into z, that is 3 by 2 a minus y minus a z cube by 3। ये जेड स्क्वायर है ना, माइनस पहले, तो माइनस 3/2 स्क्वायर ए माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस ए इंटू 3/2 ए माइनस वाई का होल क्यूब ए जेड क्यूब बाई 3 माइनस वाई बाई 3 जेड क्यूब, दैट इज अगेन 3/2 ए माइनस वाई क्यूब माइनस अगेन 3/2 ए माइनस वाई टू द पावर 4 अपॉन 6, राइट? एंड ये पूरे का इंटीग्रेशन डी वाई के रेस्पेक्ट में। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। तो इफ यू सॉल्व इट, ठीक है, कैलकुलेशन लेंदी है, टफ नहीं है, तो दैट्स व्हाई यू गाइस हैव टू डू द हार्ड वर्क। 0 to a, this is what I got, that is 3a square y square by 2 minus 3a y cube by 2 minus 3a y cube by 2 plus 3y4 by 2 plus 3y square by 4, अंदर आएगा a square plus y square minus 2ay plus 9/8 a cube minus b cube minus y cube 3a square y plus 3ab square, that is 3a y square minus 9y by 8, again a cube b cube minus 3a square y plus 3a b square, right? Again you can make it a more little crispier. It is a4 minus 4a cube y plus 6a square y square minus 4a y cube plus y4 dy. Next row, what I have done now, जो कि पहले कर देना चाहिए था, but still I have calculated this way. Coefficient, take the coefficient 9a4 by 8 minus 27a4 by 32. So this is the coefficient that you will be getting for y equals to 0, कोई coefficient नहीं है तो, ठीक है, प्लस माइनस 27a क्यूब बाई 8 माइनस 9a क्यूब बाई 8 y प्लस, सिर्फ मेहनत करना है और कुछ नहीं करना है, 3a स्क्वायर बाई 2 प्लस 3a स्क्वायर बाई 4 प्लस 27a स्क्वायर बाई 8 प्लस 27 8a स्क्वायर, राइट, y स्क्वायर, y हो गया, y स्क्वायर हो गया, प्लस y क्यूब की अगर बात करें तो माइनस 3a बाई 2 माइनस 3a बाई 2
minus 3a by 2 minus 9a by 8 minus 27a by 8 plus 27a by 8। ऊपर से देख लो, मैंने जो लिखा है बस मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। प्लस 3/2 plus 3/4 plus 9/8 minus 27/32/4 dy, राइट। तो ये y0 है, इसमें क्या आएगा, बस 0 से a से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इफ यू पुट इट, राइट, सो रो 0 से a, it will become 5a5/32 minus 36a5/16। ये देख लेना, a to the power 5 सब में आना चाहिए, otherwise you are getting it wrong। 63a³ by 16 minus 45a5/32 plus 81 32 into 5, I get 160। so 160 a to the power 5, मतलब ये पुट कर दिया हमने। lastly you will get 151/160 root to the power a5, right? Now what is rho here? Mass is equals to rho into volume, and volume is basically aq by 4. So put rho value 4 m by aq. So answer will be 151/40 ma square। सही आ रहा dimension, मतलब almost answer सही है हमारा। So ixx is 151/40 ma square। So I have given you how to solve the integral, also what were the volume element। Now next you can do it, right? Again in the conclusion you can write the application, right? But if you can see, this is a lengthy question। अगर तुम, क्योंकि छह एलिमेंट निकालने हैं and the calculation is not so easy। अगर यहाँ पर intercept a होता then it would be a much easier than this, right? और अगर ये simple एक rectangular pyramid होता then also it will be a easier। So this is a tetrahedron, more likely to say। So this will become like that। So in examination, if you are getting these types of questions, try to avoid, because by concept you will be able to solve, but the calculation will be lengthier। Okay, now let us move to the next question। Important key takeaways from here is how to take the volume element and the range limit कैसे लेते हैं, ये सीख लो, that is very important। यहाँ पर क्यूब बना लो, स्क्वायर बना लो, then you can get the idea easily। नेक्स्ट वन, ये तो डेरिवेशन है, राइट। द एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, ये प्रूफ करो। देन मोस्ट जनरल रोटेशन ऑफ द स्फेरिकल टॉप इज यूनिफॉर्म रोटेशन। यूनिफॉर्म रोटेशन दैट मींस ओमेगा विल बी कांस्टेंट, ठीक है। और ये तो फॉर्मूला पढ़ा ही हमने, दिस वी नीड टू प्रूव, ये तो प्रूव करना है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, these are conventional type of question that is written in your notes। तो notes में है ये, and it will not change, the value of this angular momentum will not change। this is the derivation that you have to do again and again। so please remember, ratta maar lo these derivations, that will help you in the examination to save time as well as space also। why space? because if you are doing using your brain, calculation वहीं पर कर रहे हो, तो you will require more space। but if you remember something, you can miss one to space that is not so required, right? एक दो स्टेप उड़ा सकते हो। okay, so let us start। question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से पढ़ना होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी नीड, व्हाट वी शुड राइट इन दी इंट्रोडक्शन। सो जो पहला मास है, वेयर द ओरिजिन कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। दिस वी नीड टू is given by this। express the component of m in terms of inertia tensor। basically angular momentum given है, हमें inertia tensor निकालना है, right? so in this question, first part
In introduction, we will write about the angular momentum. In the first question, simply we will write about the angular momentum. Now, what do you mean by angular momentum? So angular momentum is basically is a mathematical construct. Always remember, they are not conceptual things, they are mathematical things. Understand one thing, mathematical thing in the sense कि angular momentum of body depends upon the frame of reference from we are getting. In the same frame, if we shift the origin, it will change. Unlike the linear momentum. Linear momentum particle का अगर तुम एक reference frame में किसी एक point से देख रहे हो और किसी दूसरे point से देखो, then both will remain same. But here, R cross factor will be there, right? So always remember this thing. So linear momentum L, ऊपर M लिखा है, मैं M को L लिख रहा हूँ. That's it. So L is basically equals to mi ri cross vi, right? For a ith particle, summation given है ना, ठीक है, k लिखा है, we should do by I, कोई दिक्कत नहीं है. So angular momentum is defined like this only, right? So always define angular momentum, torque, right, moment in terms of mathematical equation only, right? इसी को तुम language में लिख दो, that's a different thing, but it should be written in this way only. So now we know that v बराबर vi बराबर omega I, although it is already given there, right? So simply you can write L is equals to mi summation ri cross omega cross ri. Now you know that a cross b cross c is equals to b a dot c minus c a dot b. ये सब जो फॉर्मूले है ना, ये सब लिख दिया करना साइड में. that is helpful in fetching half extra marks. Impression सही बनाता है, right? Where r I w omega I सब कुछ given है as per as the question. So let us move further. So L will be simply equals to summation mi omega dot omega omega ri square minus ri dot omega, right? Now what is ri? Ri is basically x I plus yi plus zi, k cap, j cap, I cap, right? यही चीज है. Put these value in the formula, right? ये derivation है, you can easily see from your notes also. So just put the values, you will get the answer. So if you put the value, and let's talk about the Lx only, right? Because similarly we can write Ly, Lz, everything. Let us talk about the Lx, only the x component. Also, what will be Li? L will be Lx, I cap, Ly, Z cap, Lz cap. ये सब लिखना है वो तुम्हें. I'm not writing it here, but you have to write in the examination, right? Where L equals to Lx I cap plus Ly Z cap plus Lz K cap. This you need to write. अब put करना है इसमें, so it will be summation mi component में तोड़ दो, तो omega x ri square ओमेगा x, क्योंकि ओमेगा का फिर अगेन वही कंपोनेंट है, ओमेगा x ओमेगा y ओमेगा z. इधर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आई डॉट कितना आ जाएगा, ये तो पता है मैं, वाई आई ओमेगा वाई प्लस जेड आई ओमेगा जेड, राइट? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जो हमारा वेक्टर है सिर्फ उसका कंपोनेंट लेंगे, जो स्केलर कंपोनेंट नहीं लेंगे. आर स्क्वायर इज दी
scalar, so उसका component नहीं लेना है. Omega is vector, we will take the component, right? R is vector, we will take the component. Always remember, L is vector, we are taking the x component, right? Rest dot product is the scalar one. ये दिमाग में रखना. So if you put it here, Lx will be simply equals to omega x अंदर ले जाओ summation mi ri square minus xi square. ये ओमेगा x है अंदर लेके इधर आके प्लस ओमेगा y ओमेगा x का ये था प्लस ओमेगा y सब अंदर ले जाएंगे हम लोग फिर से समेशन एम आई एक्स आई प्लस ओमेगा z समेशन एम आई वाई आई z. Now let us call this as this and this. Let us call this as ixx because it is distributing the mass along x axis, xy plane, ixy, and this as ixz. So now if you put the lx here, lx will be equal to ixx omega x plus ixy omega y plus izz omega z, right? So in junior classes, you might have studied about the Lx equals to I into omega x, but here it is not the case, right? So always remember, you should write here also that the x component of the angular momentum, you can write it, x component of the angular momentum does not only depend upon the angular velocity along the x, but also it depends upon the angular velocity along y and z as well, right? So this one line you should write it here, right? That the angular velocity along the x direction does not depend upon the angular velocity along the x direction, but also y and z. Similarly, L, y, and Lz you can write, and you can write simply in the matrix format. So I will giving you in the matrix format Lx, Ly, Lz. I hope most of you know this thing. Ixx अभी लिखा था हमने ऊपर वाला डॉट मैट्रिक्स omega y omega z, right? Now what you need to conclude this answer, starting हमने क्या किया था एंगुलर मोमेंटम के डेफिनेशन से. You will conclude this first part with the definition of inertia tensor, right? Inertia tensor. Okay, ये कैसा है? तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रैंक 2 है, right? All those things we have talked about ऊपर, ठीक है? Real and symmetric. So these things you will write in the conclusion of this portion. So it will complete the answer. Now again come to the next part. Next part, अब यहाँ conclusion कर दिया तो next part में से we will try to explain with the answer. So it is free rotation of a spherical uniform top. अब इसी से connect करते हुए हम लोग लिख देंगे right? For the principal axis, let us take omega 1, omega 2 and omega 3. Omega 1, omega 2 and omega 3. ठीक है, omega 1, omega 2 and omega 3 corresponding to I1, I2 and I3, right? When all of them are equal, then it is called spherical. We know that. When all of them are equal, we say that it is spherical, right? So in a torque free motion, that is the net external torque is 0, right? So when the net external torque is 0, right, we have studied that, I guess all of you have studied about the torque formula. So torque on a particle can be represented as T1 in
Again, tx, ty, tz जो लिखना लिखो. 1 2 3. 1 corresponds to x, 2 corresponds to y, 3 corresponds to z direction. So tau 1 can be simply written as I1 omega 1 dot plus I3 minus I2 omega 2 omega 3. Tau 2 omega 2 dot I1 minus I3 omega 3 omega 1. Tau 3 I3 omega 3 dot plus I2 minus I1 omega 1 omega 2, right? So now what will we do here? If it is equals to 0, if the torque free motion, this will equals to 0, this will equals to 0, and this will equals to 0, right? So what we should do, this all will cancel out, just multiply it with omega 1, multiply it with omega 2, and multiply it with omega 3 and add. So here it is 0, here I3 omega 2 omega 1 omega 3, this all will be becoming common, ये पूरा common हो जाएगा देखो. So I3 खत्म, I2 I1 खत्म. So here you are getting I1 omega 1 dot omega 1 plus I2 omega 2 dot omega 2 plus I3 omega 3 dot omega 3. I1 I2 I3 are same, right? So if you talk about this, we can simply write that d by dt half I1 omega 1 square plus half I2 omega 2 square plus half I3 omega 3 square equals to 0. That means it is equals to constant, right? So you can, ये conclusion में लिखोगे तुम लोग, अभी तुम लोग जो लिखना है वो निकाल रहे हैं. Conclusion में लिखोगे that the rotational kinetic energy will be constant in the torque free rotation. Still I1 I2 I3 is 0, so ऊपर वाला लिखा सकता है omega dot L equals to T, right? And L will be what? I omega. I is same, सबका same है. So from here you can simply write that omega is equals to constant, because I1 equals to I2 equals to I3 for symmetrical torque. So L will be what? I omega. So omega dot omega, omega square is equals to constant, that is omega is constant, right? So this, in conclusion, you will write for a torque free motion in a spherical body, the omega angular velocity will be constant. Also, the due to the torque free motion, the rotational kinetic energy will be also conserved, right? Okay, so that's all for the day. We will meet on day 6, and this Saturday and Sunday that is given, you are not writing the answer. Please, whatever we have studied in these 5 days, practice in these 5 days, make a short note of all these so that you can simply revise them before your examination. That will be helpful. Okay. Thank you. Good night and bye-bye.